Hello, good afternoon everyone. I hope I'm audible to everyone. If I'm not, please raise your hands. It was an attempt to raise the hands, okay? So I'm the youngest, I think so. मुझे सिर्फ 11 साल हुए हैं स्कूल छोड़े हुए, like हम स्कूल completed किए हैं. तो I would say hello to everyone. Myself is Kashyapi, as Dr. Kashyapi has already introduced me. मेरा टॉपिक आज जो मुझे मिला है टीचर्स रोल इन मैनेजिंग मेंटल हेल्थ इन टीनेजर्स. तो ऑलरेडी मुझसे पहले जो सीनियर स्पीकर्स रहे हैं डॉक्टर विवेक एंड डॉक्टर दीपक, दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैसे बच्चों में क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, कैसे उनके अंदर कोपिंग स्किल्स और ये सब लर्निंग स्किल्स डालनी होती है. तो मेरा बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि मेंटल हेल्थ क्या है, कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं कि बच्चों को क्लासरूम में हम कैसे आइडेंटिफाई करें उन्हें क्या प्रॉब्लम. तो बेसिकली व्हाई स्कूल. सो स्कूल इज़ द मेजर सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एनी चाइल्ड. It is the child's first contact with the world outside the home, and nearly 12 years of the child spends 5 to 7 hours each day in the school. So the school provides most of the important foundation pillars on which the child's personality develops. And teachers, they play the most vital role. They are the molding personality of the child. They say a potter molds the whole pot, so the teachers are that for the child. And it is extremely important that the student outcomes and well-being is on the hands of educators, but do not feel that they have the knowledge. ये हमने देखा है कि teachers कहते हैं कि हमारे पास knowledge नहीं है कि हम उन्हें कैसे help करें, किस तरह से उन्हें बताएं कि mental health क्या है. So I hope I will be able to justify that today. So what is mental health? As WHO has defined mental health as a state of complete health, able to interact with the social members, be at a complete state of mental and physical well-being, and be a incorporative member of the society, be a member of the society and able to incorporate himself or herself into the society. So mental health is more than just the absence of mental disorders. It is an integral part of the health. There is no health without the mental health. Mental health is determined by a range of socio-economic, biological and environmental factors. So अगर हम factors की बात करने हैं तो there are two, the risk factors and the protective factors. The risk factors जैसे जो सर ने कहा था कि एकदम बच्चा पैदा होने से पहले भी हमें देखना होता है कि उसकी कैसी स्थिति है, कि poor mental health during the pregnancy of the mother, family conflict है, poor family discipline है, inconsistent caregiving है, death in the family members है, या poor role modeling है parenting की तरफ से, ये एक फैक्टर हो जाता है. एक फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर्स, कि पहले से इसकी फैमिली में किसी को कभी कोई मेंटल हेल्थ या मेंटल प्रॉब्लम रही है. माल न्यूट्रिशन है कि भैया वो बच्चे को अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है, इसकी पाइप पूरी नहीं हो पा रही है, इन्फेक्शंस ले रहे हो, बार बार उसको फीवर हो रहा है, परेशानी हो रही है, स्कूल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ अच्छी नहीं है, फिजिकल अब्यूज़ है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, पुअर सोशल स्किल्स है, पुअर सेल्फ एस्टीम है. फिर ट्रांजिशंस के भाई वो किसी और शहर में रह रहा था, आज नहीं किसी और शहर में आ गया, स्कूल बदल रहे हैं. कई बच्चे होते हैं जिनके 3-4 बार स्कूल बदल जाते हैं. सो दे आर नॉट एबल टू मेंटेन अ फिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल, फिक्स्ड फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं. डिसऑर्गेनाइजेशन रहता है, पॉवर्टी होती है, मार्जिनाइजेशन होता है, एक्सपोजर टू वायलेंस होता है, कोई प्रॉपर रोल मॉडल्स नहीं होते उनके लिए. एंड देन देयर इज फेलियर ऑफ द स्कूल टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल वेलबींग. एकेडमिक फेलियर, फिर से स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, एक पुअर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बन पा रहे हैं, स्कूल बुलिंग हो रहा है, ये सब है रिस्क फैक्टर्स. Protective factors were at the end of the whole thing, and now we'll come to the protective factors. So it is important to understand everyone has mental health just like everyone has physical health, and as just like a person can have a good physical health and at the same time have a physical illness, people can have a good mental health and mental illness at the same time. So mental health disorders, हमने देखा है कि around starting from the age of 5 years, children are having mental disorder. ADHD starting to 5 age. Before the age of 10, anxiety disorder, obsessive compulsive disorders are starting. Before the age of 15, substance use disorder, anorexia nervosa. Around the teenage years, there is major depressive disorder, bipolar disorders, psychosis, bulimia, anxiety, OCD. These are prevalent. So we definitely need to know how to manage them.
So 1 in out of 7, as Dr. Vivek said, कि 6 में से 1, 7 में से 1, 15 to 24 year in India feel depressed or has little interest in doing things. 41%, that is 15 to 24-year-olds in India, it is said to have a good field support for mental health. And suicide is the third leading cause of death in 15 to 19-year-olds. So Indian statistics as seen in different states of India, and a cohort and a study done all over India showed that जो हमारे intellectual disability disorders होते हैं, वो 1.4% of the prevalence of teenagers and students हैं. Depression देखा गया है कम से कम 6% students में है. Obsessive compulsive disorder is seen in 1 to 2% of the children. Substance use disorder देख रहे हैं कम से कम 7% बच्चों में है, 11% बच्चों में है. Suicidal behaviors है कम से कम 20% बच्चों में. तो ये बहुत ज़्यादा alarming numbers हैं. जहाँ इंडिया की जनसंख्या इतनी है और उसमें हम देखें कि 40% are children, so going to 300 million. So out of 300 million and 1 in 7, so that is big numbers. So if we are seeing the suicide rates, these are suicide rates from 1995 to 2020, the latest, where the number of student suicides in India at total suicide. Total suicides हमारे पास 12,526 हैं, जिसमें से 8.2% student suicides हैं. As we all know, quota is a very big area where students are going कि भैया हमें IIT की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है. बट उतने ही नंबर से वहाँ से केसेस आते हैं कि भैया हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, हमारा बच्चा बहुत डिप्रेस्ड हो रहा है, एंड देन वी सी द न्यूज़पेपर्स. Many students commit suicide, and it is obviously seen those who commit suicide have a previous attempt of suicide also. So if a person or if his child is attempting suicide, 10 to 15% are sure to repeat it again. So 9.8 million young Indians aged between 13 to 17 years are in a need of active interventions. So what are the mental problems in teenagers? It is said that there is a crack in everything. That's how the light gets in. थोड़ा सा अगर है किसी में abnormality, किसी में कोई problem भी है, तो उसी से तो हमें पता चलेगा कि इसको क्या दिक्कत है, उससे क्या हम मदद कर सकते हैं. So that is also not a bad thing. That's a good thing. So imagining ourselves कि भी हमारा दिमाग एक जार की तरह से, उसके अंदर इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ही आ सकता है जो एक जार में संभाल सकता है. तो वो किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ की तरह से बन सकता है, किसी के लिए वो और बुरी तरह से चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है. तो ही कैन बिकम इरिटेबल, एंग्शियस, एंग्री, intrusive thoughts में overcome, recurrent intrusive thoughts, decreased activity, behavior बहुत अजीब सा हो रहा है, decreased performance रह रही है, restless रह रहे हैं, loss of appetite है, थके हुए रह रहे हैं, और struggle to control themselves. So, as a study done in Delhi ke schools, where they seen that 84% of the students believe that they have a responsibility of doing well. 81% feel distressed because of the exams. 73% are satisfied with their school life, while 70% feel the self-trustworthiness, and 67% feel the happiness. Whereas 55% feel the satisfaction with the body image. 51% have a difficulty in learning the online content, 43% have mood swings, 39% lack the social interaction of the online classes, and 28% have a hesitation in asking the questions. कैसे बच्चे कहते हैं कि I have a headache, I have too much homework, I want to cry, my stomach hurts, I don't want to do this. So हमने most problems देखे हैं, they are around the lack of energy, around anxiety, around the sleep disorder, and around the irritability. So if we see that they are feeling down, they are not feeling things, they are being hopeless, they are being tearful, they are lacking the motivation, they are having trouble coping with everyday activities. They are showing sudden changes in behavior, often for no obvious reasons. They have trouble eating, they have trouble sleeping, doing less well at school, and suddenly refusing to go to school or to work. Avoiding friends and social contact, avoiding pain. Like they are saying they are having physical pain. I'm having repeated headaches, I'm having repeated stomach aches, repeated back aches. Being aggressive or antisocial, missing the school, getting in trouble with the police, or fighting and stealing, and being very anxious about the weight or the physical appearance. It was like, losing weight or feeling to gain weight. So, coming on anxiety. Anxiety is any
stress, any fear, any situation giving us some stimuli and which is leading to have some signs and symptoms which is not in our control. So a sudden drop in score or academic performance, being too emotional or quick to anger, pervasive sadness and crying, bizarre behaviors like responding to truants here and there, becoming mute or disengaged, truancy from school, appearing too tired or sleepy in the class on a consistent basis, self-injurious behavior, significant changes in weight, frequent leaving the classes due to pains and aches that do not appear on weekends. तो हम कैसे इन चीज़ों को एड्रेस करें कि भाई कैसे हम बच्चों को बताएं कि ठीक है होती हैं चीज़ें. Tell them कि you're not the only person who is suffering from this. Okay, it happens. It's not a normal thing. Tell them having some relaxation techniques. उनको एक muscle relaxation techniques करो कि भैया feel the fingers, उन्हें tight करो, धीरे धीरे relax करो. उन्हें deep breathing बताइए, गहरी गहरी सांसें लो, थोड़ी देर के लिए गहरी गहरी सांसें लो. थोड़ी देर के लिए उनको टाइम निकाले, गिव देम टाइम आउट्स. इफ दे रिक्वायर कि नहीं मैम अभी मुझसे क्लास में बैठ के नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, आप 5 मिनट के लिए बैठ के अपना धीरे से सॉर्ट आउट करें क्या चीज़ में प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको यहाँ पे इस चीज़ में समस्या आ रही है कि आप नहीं कर पाए, तो उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम निकालें. इस तरह से हम कर सकते हैं. और अगर लग रहा है आपको कि 3-4 दिन कई बार ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन रिफर टू अ साइकियाट्रिस्ट. सो these are when we see कि they want to avoid the school out of fear of becoming embarrassed. जो सर ने एक बहुत बाबा यूज़ किया school refusal कि don't want to go to school. They are behind in work and numerous absences. They are fidgeting. They are easily frustrated. They are worried about getting everything right. So how to deal with this school refusal? So there are 2-3 ways. First, introducing the child to the next class teacher beforehand. Introducing the teachers, the parents of the child to the next class teacher beforehand. To the environment which he will be going into or she will be going into. So that is not a new or sudden change in the environment. तो उसको पहले से मालूम है हाँ मेरी ये क्लास होने वाली है, इस क्लास में ये चीज़ें होने वाली है, ये मेरे टीचर होने वाले हैं, ऐसा मेरा शेड्यूल होगा. So that will decrease the amount of school refusal कि भाई मुझे नहीं मालूम है. Like after COVID, many students face this problem. Like after 1.5 years of online classes, going back to school, के लिए बहुत ज़्यादा stressful situation था कि भाई कर नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे, घर पे रह के तो जब पहन लिए यूनिफॉर्म तो नहीं. So making school more magnetic, something to look forward on arriving, and such as playing with viewers, and homeless magnetic, no sleeping in, watching television or playing, allowing parents to send notes in students' lunch rather than the phone to the student while at school. Have the students use strength cards, superheroes to recall strengths and powers to manage stress, allowing the child to spend more time first in the library or with other staff to ease them into the building. Introduce the student to next year's teacher and have the parents visit next year's classroom during vacation interval. Identify a hierarchy of staff to meet the child on arrival at school and other staff whom the child can go if distressed during the class time. So depression. The child cries easily, looks sad, feels alone, isolated, appears anxious and afraid, find it harder to stay on task, lose the concentration नहीं maintain हो रहा है, टीचर क्या पढ़ा रही है बोर्ड पर उनका उस पर ध्यान नहीं रह रहा है, अपनी एक सोच में घूमे हुए हैं, मोटिवेशन नहीं है काम करने का, experience a change in academic performance, frequent absences from school, expresses inappropriate guilt. मुझे बुरा लग रहा है किसी बात को, पता नहीं अचानक से लग रहा है, कोई टेंशन की बात है नहीं, बस लग रहा है मुझे. So these are the things. Feeling of not being able good enough, worthlessness, failure, expressing hopelessness, nothing to look forward to, speak in a monotonous tone or monosyllabic manner, being irritable, snapping at people for no apparent reason, being restless or slow down, misusing of drugs, eat and sleep too much or too little. So we have to see that students with depression are at increased risk of self-injury and suicidal thoughts and attempts. So the educators, the teachers should be wary of any such comments of the signs about self-harm or suicide, and they should take in every comment seriously brought to immediate of the child's parents of the child's attention. So ध्यान रखना है कि क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे लग रहा है कि माइट टेक सेल्फ हार्म, अपनी खुद की जान ले या
बहुत सैड घूम रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ देर के लिए थोड़ी नज़र रखनी हो, कौन सी क्लास में जा रहा है, क्या कर रहा है, कॉर्नर में बैठा है, आपस में बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब देखना है. एंड टू नो कि हाँ कि अगर वो डिप्रेस्ड नहीं, वी कैन यूज़ एन इमोशनल चार्ट कि हाँ भी what things he's feeling. He's feeling happy, he's feeling sad, he's feeling gloomy. These are the charts we can use. So hyperactivity, impulsivity, inattention problems, as discussed, ADHD जो कहते हैं कि they have difficulty paying attention to class or staying on the task, not completing the task, making careless errors, making choices without thinking them through, blurt out the answers before the teacher finishes the question, talks too loudly, interrupts the teacher and other students, fidgeting, having difficulty in remaining still and staying in the seat. जो कहते हैं कि टीचर क्लास में बैठा है, देख खिड़की के बाहर रहा है, तो ये बहुत चीज़ें होती हैं. तो ये थोड़ा थोड़ा इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी के होते हैं. बट कई बार होता है कि वो टीचर्स निकाल देते हैं स्टूडेंट को क्लास के बाहर, के जाओ बाहर खड़े हो जाओ, कि नहीं उधर दीवार की तरफ मोड़ के देख लो. तो ये इन चीज़ों को देखने के अलावा बेटर है कि जैसे अभी मेरे पहले सीनियर्स ने कहा कि उनको टास्क में इन्वॉल्व करो, कि अच्छा जाओ उन टीचर को ये सामान देकर आओ. अच्छा थोड़ा जो टास्क है उनको एक एक स्टेप्स में बताओ कि पहले ये स्टेप है, फिर इसका दूसरा स्टेप ये करना है, फिर तीसरा स्टेप ये करना है. अगर वो अकेले नहीं कर पा रहा है तो उसको किसी और के साथ पेयर अप कर दो कि हाँ देखो ये ऐसे कर रहा है, इसमें काम उनको इतना है, आपका इतना है. तो इन्वॉल्व करके रखना है. So students with an attention problem may not listen when spoken to, have difficulty in paying attention or staying on task, do not complete the task and make careless errors, they daydream and appear spacey, they have a very messy or disorganized desk area, they lose their objects and avoid activities that require sustained mental effort. Thus, a referral may be appropriate when the symptoms are disruptive to the child at classroom and impact the child's educational attainment or that of the others, and put the child or others at the risk of injury when classroom interventions are not sufficient to mitigate the problem. Excuse me, Dr. Kashyapi, if you could please conclude within 1 or 2 minutes. Okay, it's very well done. So, autism and conduct problems was my next. Conduct problems when he's aggressive, when the child is bullying or teasing the other kid. So ask him, why are you doing this? What is the internal reason? These are some tasks which he can do. So basically it is okay to have depression, it is okay to have anxiety, and it is okay to have an adjustment disorder. We need to improve the conversation. We all have mental health in the same way we have physical health. Second point, this is a website जहाँ पे हम अपना जाके, they have various videos which help children to discuss various things like grief, the loss, घर के आसपास कोई वायलेंस हुआ है तो हम कैसे उसके बारे में बच्चे को बात करें. So these are small cartoon things but with a interactive way of telling कि हाँ बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम उससे बात कर सकते हैं. And this is the mental health checking, as we have सबके पास classrooms हैं, सबके में boardrooms हैं. We can have this कि भाई I'm feeling okay, I'm not feeling happy, I'm feeling gloomy and struggling. These are different levels of mood. And उसके सामने एक बच्चा अपना एक sticky note लगा सकता है, उसके पीछे अपना नाम लगा सकता है. That way उसका नाम disclose नहीं हो रहा है, but at the end of the day teacher can see आज बच्चों ने क्या कैसे feel कर रहे थे throughout this whole classroom, and then they can address it separately with the kid. So thoughts developing through a stance कि thoughts क्या हैं, जब हमें situation है कि भैया क्या उस समय गुस्सा आया, हमें anxiety हुई, हमें क्या problem हुई, वो situation. Thoughts उस दौरान मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि भैया कि कल एक सड़क पे बस का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से मुझे डर लग रहा है कि मेरी बस का एक्सीडेंट ना हो जाए. Feelings कि डर लग रहा है, तो behavior क्या है कि नहीं आज मैं बस में नहीं जाऊँगा. और भी सड़क पे इतनी बसें हैं जो सही चल रही है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसे हाउ वी कैन एड्रेस दैट. अदर देन दैट इज द न्यूट्रिशनल एंड फिजिकल एक्टिविटी. अच्छा न्यूट्रिशन रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ रखनी है जिसमें बच्चों से एक्सरसाइज वगैरह बिफोर क्लासरूम, आफ्टर क्लासरूम्स, एट द होम, एंड वी कैन एडवाइस.